Assalamu alaikum students. Our today's topic is microbes in sewage treatment. As we all know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns and in villages also. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. As we all know, this sewage contains a large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. So far as this municipal wastewater is concerned, it cannot be discharged directly into the natural water bodies like rivers and streams. And why we cannot discharge this into these rivers and streams? As we all know, this will lead to the pollution of water. So before disposal of this wastewater, this sewage is treated in sewage treatment plants, which we call as STPs, sewage treatment plants. STPs to make it less polluting, ताकि हम इसको less pollute कर सकते हैं. This treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in this sewage. And this treatment is carried out in two stages. That is the primary treatment stage and the secondary or biological treatment stage. Primary treatment stage, it can also be called as physical treatment stage. So far as this primary treatment stage is concerned, this involves basically physical removal of particles, large and small. Physical removal of particles, whether these particles are large or small, from the sewage through filtration and sedimentation. Initially, floating debris, whatever is floating in the water, is removed by sequential filtration. जो कुछ भी पानी में तैर रहा है उसको हम sequentially filter कर सकते हैं. उसके बाद then this water is allowed to enter this chamber where the sedimentation takes place, where the soil, small pebbles are removed by sedimentation, and water is allowed to sediment and all the solids that settle from the primary sludge and supernatant forms the effluent. This effluent from the primary settling bank is then taken to the secondary treatment plant. अब ये पानी जिसको हमने फिल्ट्रेशन पहले किया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की, जिससे हमने फ्लोटिंग डेब्रिस को इससे अलग किया, उसके बाद इसमें सेडिमेंटेशन की, जिससे इसके सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेटल हो गए, और इस पानी को अब हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर दाखिल किया. Now the primary effluent is passed into the large aeration tanks
large aeration tanks, where it is constantly agitated mechanically, इसको हम एजिटेट करते रहेंगे एंड आयर पंप करते रहेंगे तो ताकि वो आयर इसके साथ मिक्स हो जाए। एंड इससे क्या होगा, दिस विल अलाउ द विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स, दैट इज फ्लोक्स क्या है, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures। बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएंगे, उन बैक्टीरिया के दरमियान ये फंगस भी उगेगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्लोक्स। और ऑक्सीजन हम इसमें इसको एजिटेट करते रहेंगे, ऑक्सीजन इसके अंदर दाखिल करते रहेंगे, ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये ग्रो करते जाएंगे और इनके ग्रो करने से जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये खा जाएंगे। While growing these microbes, they consume a major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces BOD, biological oxygen demand. Reduces this biological oxygen demand of the effluent. ये BOD क्या है? BOD, biological oxygen demand. It refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा जब वो सारा कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय बैक्टीरिया, तो उस ऑक्सीजन को हम कहेंगे BOD। दिस मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड thus we can say that indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water। कशर पे वनो ये कन अकिस लीटर आबस मज कोता माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर आसि तथ पी बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया खत्म कर तीस कालस रोज ऑक्सीजन निवान, यूत यह ऑक्सीजन निवान गस तथ वनो BOD। ये टोटल अकिस लीटरस मज तमाम ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने खुद कोता ऑक्सीजन नी तथ वनो यह गो BOD। यूत यूत BOD कम गस तूत तूत वनो यह वाटर हसा गो साफ, अत गो ऑर्गेनिक मैटर खत्म। तब इसलिए हम कहते हैं BOD is the measure of the organic matter present in the water। The greater the BOD of waste water, more is its polluting potential। जितना इसकी greater BOD होगी तो उससे हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी जो है this is polluted। Once this BOD of the sewage is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank। जब ये कम हो जाएगा इसका BOD, इस पानी को हम अब इस सेटलिंग टैंक के अंदर पास कर देंगे। उसमें क्या होगा, ये बैक्टीरिया फ्लोक्स जो हैं दे आर अलाउड टू सेटल डाउन। इनको हम सेटल डाउन यहाँ पे दिस सेडमेंट, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लाइज। एक्टिवेटेड स्लाइज SLUDG, एक्टिवेटेड स्लाइज। इस एक्टिवेटेड स्लाइज में स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लाइज is pumped back into this chamber, एरिएशन टैंक जिसे हम कहते हैं। किस लिए? टू सर्व एज इनोकुलम। जब यहाँ से नया पानी आएगा जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें ये एज इनोकुलम काम करेगा, फिर हम उसको ऑक्सीजन देंगे, उससे इसकी
ग्रोथ बढ़ जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करेगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करने के लिए, जिस तरह हमने दूध में इनोकुलम डालते हैं ताकि वो उसका कर्ड बन जाए, इसी तरह से इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा हम इस एरिएशन टैंक के अंदर वापस कर देंगे ताकि ये एक्ट करेगा एज इनोकुलम। द रिमेनिंग मेजर पोर्शन ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज, अब इसको हम पंप करेंगे किसमें, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। वहाँ पे क्या है, अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली, वो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे, बैक्टीरिया फंजे इसको वो डाइजेस्ट करेंगे इस स्लज में से। इस डाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, mixture of gases like CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैसेस तैयार होंगे, CO2, H2S, CH4, ये चीज़ें तैयार, इसको हम कहेंगे बायोगैस। इन्हें के भी दो फायदे मिले, एक तो हमारा पानी साफ हो गया, उसके साथ हमें बायोगैस भी हासिल हो गई। एंड दिस बायोगैस कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। After this effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like rivers and streams. तो ये अब पीने के काबिल है। This is how microbes help in the sewage treatment. अब आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान, वो यही प्लान है कि ताकि इन दो बड़े जो दरिया हैं, इनका पानी जो है उसको साफ़ कर देंगे, साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वाज अबाउट माइक्रोब्स एज सीवेज ट्रीटमेंट। हमने क्या सुना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, जब हम इस पानी को जिसके अंदर ये गंदगी मौजूद है, इसको हम फिल्ट्रेट कर देंगे, उसके कैंसल फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके वजह से जो है फ्लोटिंग डेब्रिस जो है इससे अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको एक दूसरे चैम्बर में दाखिल करेंगे जहाँ इसकी सेडमेंटेशन कर देंगे। सेडमेंटेशन से क्या हो, सोल्ड पार्टिकल इससे अलग हो जाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इसमें भी मौजूद है। उसके बाद इस पानी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे, वहाँ पे इस पानी को हम एजिटेट करेंगे और साथ में ऑक्सीजन इसके अंदर डाल देंगे, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, किसके साथ, फंगस के साथ, वो इसको क्या कहेंगे हम, फ्लोक्स। तो यहाँ से ऑक्सीजन देते रहेंगे, इससे हमें इसको हम कहते हैं BOD। जब तक ये BOD कम हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर अब ख़त्म हो गया है। अब इस पानी को हम इस एनारोबिक सेडमेंट टैंक दाखिल कर देंगे, वहाँ पे इस बैक्टीरिया फ्लोक्स को हम सेडमेंट कर देंगे, इसमें से थोड़ा सा हम वापस इसमें कर देंगे ताकि ये एक्ट करेगा एज इनोकुलम। तो बाकी को हम एनारोबिक बैक्टीरिया के ज़रिए से ख़त्म कर देंगे। तो उस ख़त्म करने के दौरान से हमें गैसेस हासिल होंगे, लाइक मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, इनको हम बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस हमें एनर्जी जनरेशन के काम में ज़रूरत आ सकता है। तो यहाँ से जो पानी अब निकलेगा वो पानी जो होगा दैट विल बी प्योर वाटर एंड दैट विल बी डायरेक्टली फ्लोन इनटू द रिवर्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दिस इज़ हाउ microbes help in the sewage treatment. Thank you students, thank you very much.